एटम को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक न्यूक्लियर पार्ट एंड अदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियर पार्ट इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियर। इट इज दैट अगर हम 1 मीटर की बाल लाएंगे, बड़ी सी 1 मीटर की बाल, क्लियर? अगर हम 1 मीटर की बाल लाएंगे, उसको हम सेंटर में रखेंगे और अगर हम, और तीसरा पॉइंट इसने क्या बताया कि टोटल मास, द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में वो पार्ट होता है जो विच इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है दे आर फास्टली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस सर्कुलर पाथ इज नेम्ड एज। जितने प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अराउंड द nucleus, making the atom as a whole electrically neutral. And why electrons are not flying off from the nucleus? जो electrostatic force of attraction है, it holds the electron around the nucleus. Why, if there is an electrostatic force of attraction, why this electron is not falling into the nucleus in nucleus? And with the result, since the two forces they are having the same magnitude and but they are in the opposite direction, with the result their vector addition comes out to be equivalent to 0. So the net force on the electron becomes 0, and when the net force on the electron is 0, the electron does not fall into the nucleus. This accounts the stability of the atom.